हेलो, आवाज आ रही है क्या? कैन एनीवन कंफर्म इन चैट बॉक्स? प्लीज राइट yes if you are able to hear the voice. हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। ओके, अभी रेस्पॉन्स आया है। ठीक है, इंशाल्लाह लेट अस स्टार्ट नाउ। Let me screen share just a moment. क्या? So let us start the program. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अजीज सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस एमएलसी सेशन में मैं आप लोग आज के इस वी सपोर्ट सेशन में मैं आप लोग सबका वेलकम करता हूं। एंड आज का जो सेशन है हमारा टाइम मैनेजमेंट। एंड हमारे साथ जो कोच हैं, कोच अब्दुल मन्नान, आप एक एनएलपी ट्रेनर है। एंड लास्ट टाइम का भी जो टाइम मैनेजमेंट का सेशन था, आप ही का हम एक्सपर्टीज और आप ही का ही नॉलेज से हम इस्तेफादा उठाए थे। तो आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कोच, एंड फिर कोच का हम सेशन रखते हैं ऑन टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे फीडबैक फॉर्म के लिए, एंड देन इंशाल्लाह फिर रेज्यूम करेंगे सेशन। लास्ट 2 मिनट्स में इंशाल्लाह प्रोग्राम का वाइंड अप कर देंगे हम। तो आगे बढ़ते हुए वी सपोर्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वी सपोर्ट इज एन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू ऑफर ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वेलफेयर सर्विसेज to all communities regardless of religion, region, caste, gender and political beliefs. The objective of the foundation is to help build a society where everyone has access to basic resources required for a decent and peaceful and graceful life. In order to achieve this objective, the foundation primarily focuses on areas such as education, employment, healthcare, resources development, entrepreneurship, microfinance, charity, and other related areas that will support the realization of the objective. तो इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जो ह्यूमैनिटेरियन, सोशल वेलफेयर और सोसाइटी को उभारने में जो रिसोर्सेस या जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो गैप्स आ गए हैं सोसाइटी में, उसको फुलफिल करना चाहते हैं। बेसिक नीड्स हर इंसान की, हर फर्द की नीड है, ये उसको हम फुलफिल करना चाहते हैं। फॉर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हमारे है ना ऐसे एक्टिविटीज होते हैं, वो एस्टैब्लिश एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेंटर, organize career guidance seminars and workshops, organize competitive exams, coaching programs and mentoring. साथ ही साथ skill development center to guide job seekers and youth, conduct leadership programs for professionals, soft skills and employability skills program for students and job seekers. तो इसके बाद आज के हमारे जो कोच हैं, कोच अब्दुल मन्नान, मैं आपको दिल से वेलकम करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। आपको हैंडओवर करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कोच अब्दुल मन्नान इज एनएलपी कोच एंड प्रैक्टिशनर। पेशे से तो आप इंजीनियर हैं, एंड स्टैंडर्ड टच आपका खुद का बिजनेस है, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ आपने AMLC अब्दुल मन्नान लाइफ कोचिंग उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपने फाउंड किया है टू हेल्प पीपल कम आउट ऑफ देयर फियर्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, काउंसलिंग्स एंड इस्लाम एंड करंट हालात के ऊपर जो करंट प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी आपके रेगुलर सेशंस होते हैं।
और आपने तकरीबन अभी तक हजार से भी ज़्यादा वर्कशॉप्स किए हैं इंडिया, सऊदी अरेबिया, रियाद, जिद्दा, दम्माम, खोबर, और इंडिया में गुलबर्गा, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे वगैरह, दुबई में भी आपके प्रोग्राम्स हो चुके हैं। और बिजनेसेस के लिए बिजनेस कंसल्टेंट है आप, प्रोडक्टिविटी एंड उसके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, इसको भी आप केटर करते हैं। और लास्टली आप स्टैंडर्ड टच के को फाउंडर एंड सीईओ भी हैं, तो उस पर भी आपकी ओवरसाइट रहती है। तो दैट्स इट इन शॉर्ट। Jazakallah khair to the audience, and the speaker as well. I hand over to you, Coach Abdulmannan. जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल नासिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Once again, we are on a भी कुछ बोले क्या बीच में? We are on a very important discussion on time management, और last time जो है it went so well, अल्हम्दुलिल्लाह. So there was popular demand. बहरहाल जो डिमांड करने वाले थे, लेकिन वो लोग अब गायब दिख रहे हैं. The demand was there, the supply came, but when the supply was there, the people who demanded vanished. Anyways, no issues. कोई एक इंसान भी अगर जो है फायदा कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह. और एक भी चीज ये कि जो है कहने वाला खुद अपने लिए जो है बेनिफिट करता है. लैसा मुतकल्लिमु खैरुम मिनल मुस्तमिईन. और ऐसा नहीं कि जो है कहने वाला सुनने वालों से बेहतर है, उसके खुद के फायदे के लिए. और ये भी कहा जाता है कि टीचिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, एंड एज जिम क्विक सेज, व्हेन यू टीच यू लर्न इट ट्वाइस. सो आई एम एक्चुअली लर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह. तो आइए आगे बढ़ते हैं. एंड आई एम अज्यूमिंग इंशाल्लाह के अभी जो 19 इंटरेस्टेड पीपल यहाँ पर, जबरदस्त अमेजिंग लोग जो बैठे हुए हैं, probably have attended the first session. So let's quickly recap. Nasir, can we just hide that? मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ लोगों को. Otherwise people will see the screen and they will give the point. All right, so let's see the comment section. Come on, please. Bismillahirrahmanirrahim. आप लोग शेयर करें कि last time what were the learnings 2 weeks back, क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखे थे regarding time management. In a simple terms, let's say what is time. There was a definition of time, कि टाइम क्या है, और टाइम की इम्पोर्टेंस फ्रॉम कुरान, टाइम की इम्पोर्टेंस फ्रॉम हदीस, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फ्रॉम मॉडर्न थिंकर्स. तो नो नीड फॉर इन दी सीक्वेंस, जो भी जहन में आ रहा है आप उसको डालें. एग्जैक्ट सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, बट जैसा भी आपके जहन में आता जा रहा है, जस्ट कीप शूटिंग योर आंसर्स. यस, बिल्कुल. इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम आया था, टाइम मैनेज कैसा करना उसके ऊपर आया था, बिल्कुल, बल्कि वही टॉपिक भी थी. Zabardast, still it's a good attempt. Come on, I would request even Abdul Nasir can share what he has learned, because other people from We Support, organizers from We Support, and who all is there had attended last time. Do share please. Time की value के बारे में बात आई थी. Very good, mashallah. Samyuddin. Okay. What else? Come on. How to usefully use time. चले, बहुत अच्छी बात है. Coach Abul Ala, Brother Abdul Nasir, and others. Come on. Want some involvement. What were the learnings of last time? या फिर नहीं, जस्ट ऐसे ही सुन लिए थे. नहीं, याद नहीं है, कुछ भी पीपीटी शेयर करो. करेंगे, पीपीटी भी शेयर कर देंगे इंशाल्लाह. यस, बिल्कुल शेयर करेंगे. टाइम एंड लाइफ बैलेंसिंग, सेल्फ पॉइंट्स. चले, जबरदस्त. कुछ क्वेश्चंस जो ना सर्कुलेट हुए थे. I mean, sorry, not questions. The questionnaire was, or rather, the Excel sheet was circulated. तो उसमें जो है ना हमको we got a lot of questions. Predominant questions are on procrastination. तो हम procrastination को लेंगे, क्योंकि last time जो ना procrastination नहीं लिए थे. So here we go. I would request Brother Abdul Nasir, please आप जरा वो sheet share करें, the slide, where there is a questionnaire of procrastination. So I would request, recommend, suggest के have the listeners के just take some pen and paper ले लें आप, और यहाँ पर आपको जो ना scores लिखना होगा. So Nasir, can you please just share those
शेयर द क्वेश्चन हियर। यस। आर यू ए प्रोक्रास्टिनेटर? तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि प्रोक्रास्टिनेशन तो तकरीबन लोग जानते हैं, बट जस्ट इन केस इफ यू डोंट नो, प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीज को टालना, और ये बहुत कॉमन है, यानी तकरीबन लोग करते हैं, एक्चुअली 99% लोग करते हैं। अरे लेट्स से जो है ना, बीवी बोली कि भाई तरकारी लेकर आओ, अभी नहीं, मैं शाम में लेके आता हूँ। शाम हो जाती, भूल जाते, फिर जब आते नमाज से घर पे, तरकारी लेकर, नहीं नहीं अभी नहीं, मैं कल लेके आता हूँ। घर में जो है ना कोई, लेट से लाइट का स्विच खराब हो गया है, फैन नहीं चल रहा, तो बनाने जो है ना कई दिन हम लगा देते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब तक कोई डंडा लेके ऊपर नहीं ठहरता। ऑफिस के काम में वैसा नहीं होता, क्यों? ऊपर बॉस ठहरा हुआ रहता, डिले करेंगे तो सैलरी कटेगी, ही विल फायर यू। लेकिन घर के कामों में, पर्सनल चीजों में, पर्सनल डेवलपमेंट के, सेल्फ डेवलपमेंट की चीजों में ताखिर होते रहती। तो सेल्फ यानी ये जो डिले है, इट्स वेरी डिस्ट्रक्टिव, और इंसान इससे जो है ना आगे नहीं बढ़ता। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ लेजीनेस, और इसलिए जो है ना दुआ भी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसली। कसल मतलब काहिली, काहिली से जो है ना अल्लाह मुझे बचा लीजिए। काहिली बहुत डेंजर चीज है, काहिली इंसान को तबाह कर देती। यू नो एवरीथिंग, यू हैव द नॉलेज, बट आप काहिली करके जो है ना वो चीज से वो अमल से जो है ना पीछे हट जाते हैं। यू नो इट्स बेनिफिशियल, नमाज पढ़ना मालूम उसका फायदा है, बट काहिली कर ले। ताजुद पढ़ना मालूम उसके बेनिफिट्स हैं, काहिली कर ले, तो इट्स वेरी वेरी डेंजरस। तो प्रोक्रास्टिनेटर इज समवन हु डिलेज द वर्क, इतना डिले करता, इतना डिले करता कि इनफेक्टिव, या फिर जो है जब बाद में कोई डंडा लेके सर पे ठहरते हैं, या फिर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाती है, जब जो है ना वो काम को करते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर टू प्रोक्रास्टिनेशन, राइट? तो आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बिनासिब प्लीज कैन यू जस्ट शेयर द क्वेश्चनर? आई एम अज्यूमिंग टिल नाउ यू हैव द पेन एंड पेपर विद यू। नहीं भी है तो आप मोबाइल में जो आंसर्स लिख लें, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह उसमें। तो it's a bit challenging for me to read over here. Nasir, can you just read out the questions? I often find myself performing tasks that I had intended to do days before. तो ये क्लासिकल जो है ना प्रोक्रास्टिनेशन है, जो बहुत पहले करने का इरादा था, लेकिन वो अब तक जो है ना आप करे नहीं, कई दिन पहले तय करे थे। तो अब यहाँ पे ऊपर जो है ना 5 डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास। नॉट लाइक मी, आप ऐसा नहीं है तो 5 डालें, या जो है ना नॉट लाइक मी एट ऑल, या नॉट लाइक मी 4, या नीदर, न्यूट्रल है तो 3, लाइक मी है तो 2, वेरी लाइकली है तो 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्केलिंग करना है, वो हिसाब से नंबर्स देना होगा, और नंबर्स वेरिएंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ओके, गो अहेड ना सर। Planning a meeting, I make the necessary arrangements well in advance. तो आप ये प्लानिंग कर लेते हैं एडवांस में, या जो है ना प्लानिंग बिल्कुल नहीं होती, तो हाउ डू यू डू इट? कम ऑन, राइट द आंसर्स। ओके इज़ान, वेरी गुड, आपका आंसर 2 है। आप पर्सनल रख लिए तो भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है। बाद में हम इसको टोटल करेंगे इंशाल्लाह। ये क्वेश्चंस आर वेरी क्लियर, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। I generally return emails and phone calls promptly. I कॉल आ find रहा है, जी, हाँ कॉल आ रहा है, आप जो है ना ताखिर कर रहे हैं, अभी नहीं, अरे देख के साइलेंट पे कर दिए, नहीं थोड़ी देर के बाद उठाएंगे, अरे बाद में कॉल कर लेंगे बंदों को, वो बाद आ रहा नहीं कभी, है ना? ठीक है, I नेक्स्ट। find I find that jobs often don't get done for days, even when they require little else except someone sitting down and doing them. जी हाँ, तो जैसा जो है अब फॉर एग्जांपल, जैसा मैं बताएगा ना, घर में एक लाइट जो है ना खराब हो गई, चेंज करने जो ना आपको 10 मिनट का काम नहीं है, लेकिन आप वो जो है ना ताखिर करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर आपका ये मिजाज है तो उस हिसाब से वहां पे आप स्कोर डालें उसको। Once I have the information I need, I usually make decisions as soon as possible. अब कोई चीज के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया, अब उसके बावजूद भी आप जो है ना डिसीजन नहीं ले रहे, या फिर फौरी डिसीजन ले ले रहे हैं, तो फिर वो इमीडिएट जब आप डिसीजन ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो दैट्स अ वेरी गुड साइन, तो वो हिसाब से स्कोर डालिए। When I have something difficult to do, I tell myself that it's better to wait to do until I am feeling more inspired. क्लासिकल प्रॉब्लम, बहुत से लोगों को देखा मैं, कोई टफ चीज आ जाती है तो उसको क्या करते हैं, टाल देते हैं, अभी नहीं, बाद में नहीं, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, हफ्ता, हफ्ता नहीं, महीना गुजर जाता, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, और वो जो ना माइंड पे और ज्यादा बर्डन होते जाता है। डिफिकल्ट रहा, फेस इट, यू नो सक्सेस इज ऑलवेज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। Even though it's difficult, yes, there will be something in life, it will be easy, some will be difficult. Even if it's difficult, face it, fight it, you know, करें उसको, handle करें, get it resolved. You'll feel more relaxed, more happy, and more efficient. Next.
I usually have to rush to complete tasks on time. हाँ, आखिरी वक्त पे बच्चों की स्कूल की फीस देना है, लास्ट मिनट जाके जो है ना आखिरी दिन जाके पे कर रहे हैं, या फिर लाइट की बिल नहीं भरे, फोन की बिल है, ताखिर चलते जा रही, डिले करते जा रहे हैं। क्या अगर ये आपका मिजाज है तो वो हिसाब से स्कोर डालें। I usually accomplish all the things I plan to do in a day. दिन में आपका जो है ना जो प्लान बनाते हैं सुबह उठते, वो पूरा प्लान एकम्प्लिश हो रहा है, फैंटास्टिक, तो वो हिसाब से स्कोर डालें। I usually start a task I am given shortly after I am given it. कोई एक काम दे दिए, बेगम बोल दिए कि भाई बाहर से जाके जो है ना गोश्त लाना है, और देखेंगे भाई अभी मूड नहीं हो रहा, या नहीं चलो इमीडिएट गए, जो बोल के जो है ना वो काम कर दिए अमेजिंग, तो वो हिसाब से स्कोर डालें। When deadlines are approaching, I often waste time by doing other things. डेडलाइन करीब है उसके बावजूद भी जो है ना डिले कर रहे हैं, वेरी डेंजरस ट्रिट, ठीक है ना, तो अगर इस तरीके से है वो हिसाब से स्कोर डालें। I often have नेक्स्ट, tasks finished sooner than necessary. बिफोर टाइम जो है ना आप काम कर दे रहे हैं, डेडलाइन से पहले जो है आप कर दिए, बच्चों के स्कूल की फीस है 10 दिन पहले भर दिए, लाइट की बिल है 15 दिन पहले भर दिए, या जिस दिन आ गया उस दिन फ्री, तो बिफोर टाइम कर रहे हैं, अमेजिंग, राइट द स्कोर। When preparing for a meeting, I am seldom caught having to do something at the last minute. ओके, वेरी ओपन है कि लास्ट मिनट पे नहीं करते आप जो है ना, I often delay starting tasks that I have to do. कुछ करना है तो हाँ अभी करेंगे, शुरू करेंगे, देखेंगे, हाँ जूम मीटिंग है अभी थोड़ी देर से खोलेंगे, लिंक बाद में क्लिक करेंगे, यू नो समथिंग लाइक दैट। When ठीक है, faced with नेक्स्ट। a huge task, I figure out what the first step is so that I can get going. ठीक है, तो जब बड़ा टास्क आता है सबसे पहली चीज ये कि उसका स्टेप 1 जो है ना कर लेना है, तो अगर आप उस तरीके के मिजाज है, फैंटास्टिक, राइट द आंसर। I frequently say, I'll do it tomorrow. मैं कल कर लेता हूँ भाई, देखेंगे कल देखेंगे भाई, अरे बाद में देखेंगे, इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, ये आपका मिजाज है तो डेंजरस है, वो हिसाब से स्कोर डालें। Okay, so I am assuming everybody has done their totals. Kindly give a yes, confirm with a yes. Confirm with a yes, please. Take your time, count the scores, no cheating, and write your score. Okay, Samiuddin is going amazing, mashallah. Anyone else? Okay, Abdullah, very good. Who else? Total कर, I'm assuming others are total. I am also assuming कि बाज लोग procrastinate करिए काम करना, वो भी मैं श्योर हूँ। बाज यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं जो बोले अरे भाई ये बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी करने की क्या जरूरत है। अगर कोई ऐसा है तो डालिए, इफ यू आर बोल्ड इनफ टू जस्ट राइट आई, यू नो, यू हैव प्रोक्रास्टिनेटेड, जो है ना ये टेस्ट को भी जो है ना बाद में करेंगे, अभी क्या करना जरूरी है। ओके, आई नीड एटलीस्ट 2 मोर आगे बढ़ने के लिए। कम ऑन, 19 people, only 3 answers. दूसरे लोग तो बोले भाग गए, भाई अम्मा इन्हों बहुत सवालत कर रहे हैं। All right, so Nasir, can you just share the scores? Okay, so here are the scores now. If your score is between 46 to 75, good news, you're not a procrastinator. तो स्कोर 46 to 75 के बीच में है किसी का? Just write I. Okay, is there anyone? मसूद भाई, is your score between 46 to 75, या फिर आप कंप्लीट कर लेते ये डाल रहे हैं? Oh, I माशाल्लाह माशाल्लाह, big round of applause for brother Masood, 47, जबरदस्त, amazing. Who else? Come on, anybody mild procrastinator? Okay, Samiuddin 45, borderline पे है, ठीक है ना, तो आपको आगे बढ़ना होगा। mild procrastination, Izhan mild procrastination, okay. और बाकी मैं पूछूंगा नहीं, between 15 to 30 big time procrastinators,
शायद वो लोगों ने जो है ना फॉर्म भी नहीं भरा होगा। So this is it, and we have to be really really careful. बहुत dangerous चीज है procrastination, और दुआ करना है कि अल्लाह ताला इससे जो है हमको महफूज रखे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली, मिनल कसल, काहिली से अल्लाह ताला हमको बचा लीजिए। ठीक है, so yeah, don't use the word try. Try means again, you are giving yourself a chance of failure. I will do my best, I will do it, है ना। वर्डिंग्स है वेरी इंपॉर्टेंट, लिंग्विस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेशन नहीं हमारा, अदरवाइज हम लिंग्विस्टिक्स पे खुद ना काफी लंबा बात करते हैं उसमें। Anyway, so jazakallah khair everybody for contributing, and for those just listening but not responding, still jazakallah for you people also. Okay, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को किस तरीके से जो है ना हम ओवरकम करें। सो लेट मी जस्ट आस्क कौन, मसूद भाई। मसूद भाई, आपका बहुत जबरदस्त स्कोर है, तो आई मीन यू आर नॉट अ प्रोक्रेस्टिनेटर, यू हैव अ गुड स्कोर। सो हाउ, व्हाट डू यू थिंक, आई मीन आप भी और कोई दूसरे भी रहे तो शेयर कर सकते हैं कि हाउ कैन वी ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या तरीकेकार को जो है इस्तेमाल करते हैं। एनीवन एल्स भी अगर है तो शेयर कर सकते हैं। कोई अगर जो है वॉइस में बोलना चाहते हैं तो वॉइस में बोलें, बिल्कुल चलें। 5 सेकंड रूल, फैंटास्टिक। सो व्हाट इज 5 सेकंड रूल, व्हाट इज 5 सेकंड, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना। सो कैन यू जस्ट शेयर इट इन द वॉइस, explain it in 30 seconds. When it's come in the mind, do it. Sorry, once again. When it comes to the mind any task, do it. We have to do it at the same time. जबरदस्त। कितनी देर में करना है वो? Oh, I remember like 3 seconds, 5 to 3 seconds. 5 seconds max, उसके अंदर जो है ना कर लेना है। 5 second max. डिले करेंगे तो उसके बाद फिर जो है ना, अरे अभी नहीं, नको, बाद में कल करेंगे, इंशाल्लाह देखेंगे, अल्लाह मालिक, you know, this thing will go. जज़ाकल्लाह खैर। तो anything else apart from this, apart from the 5 second rule, और क्या टेक्निक्स हैं जो आप ये कर रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स, और कोई शेयर करना चाहेंगे? सो बेसिकली देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन इज नथिंग बट इट्स अ माइंडसेट। आई मीन मैं ये सवाल करता हूँ लोगों से, भाई मेरे से प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा। अच्छा भाई काम, अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है क्या एग्जैक्टली? तो बोलते नहीं भाई, कुछ काम करना रहता, मैं इसको डिले करता हूँ। तो फिर डिले कर रहे कौन? हु इज डिलेइंग इट? एम आई डिलेइंग इट? Are your kids delaying it? Is your wife delaying it? Is your boss delaying it? Who is delaying it? Who is delaying it? The person is delaying it. बंदा खुद डिले कर रहा है। अगर बंदा खुद डिले कर रहा है तो उसको फिर जल्दी कौन कर सकता है, या कैसा कर सकते हैं? Who is the one responsible for making it fast? उसको और तेज करने के लिए, जल्दी करने के लिए, उसको करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सेल्फ, बंदा ही जिम्मेदार है ना। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, टेक ओनरशिप ऑफ योर एक्शंस, डोंट डू द ब्लेम गेम। भाई वो नहीं, ये नहीं, you are responsible. Who wants results? You want results, so you are the one who has to take actions. inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. अल्लाह ताला उस कौम का हाल जब तक नहीं बदलता, जब तक वो अपने हाल को नहीं बदलते। The change has to come within. You have to be the agent of change. आपको अपने अंदर से जो है ना बदलना होगा, फिर जो है ना राहें खुलेंगी। इसके अलावा और भी जो अदर टूल्स हैं प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने, क्रिएट अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी पीपल ओवर हियर क्रिएट अ डेली टाइम टेबल कि भाई ये मेरा टाइम टेबल है, ये टाइम पे उठना है, ये टाइम पे खाना है, ये टाइम पे ये करना है। जस्ट राइट आई बिफोर डूइंग दैट। नेक्स्ट टूल इज द टू डू लिस्ट, जो हम लास्ट टाइम भी शेयर करे थे। क्रिएट अ टू डू लिस्ट। सो हाउ मेनी पीपल ओवर हियर आर क्रिएटिंग द टू डू लिस्ट? जस्ट राइट आई। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्रिएटिंग द टू डू लिस्ट, सो आई वुड से आई अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह। टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको जो है ना डायरेक्शन देगा, सबकॉन्शियस में आपके जो है ना माइंड में रहेगा मेरे को जो है ना काम करना है, और आप करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे और आप सेटिस्फाइड होंगे, और जो है ना ये प्रोग्रेस आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा, बिकॉज प्रोग्रेस इज अ ग्रेट मोटिवेटर। राइट इट डाउन, प्रोग्रेस इज अ ग्रेट मोटिवेटर। तो नेक्स्ट टाइम जो ना आप और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे एंड यू विल बी अ बेटर परफॉर्मर। सी प्रोक्रेस्टिनेशन नथिंग बट अ हैबिट, एक हैबिट बन जाती है कि हर चीज को जो है ना टालना। जैसा उससे जब बाहर निकलते हैं, व्हेन यू बिकम अ प्रोएक्टिव पर्सन, व्हेन यू बिकम एन एक्शन टेकर, तो वो भी एक हैबिट है। और जब एक्शन टेकर की जब हैबिट क्रिएट करेंगे, एक आपका टाइम टेबल रहेगा और आपकी जो है टू डू लिस्ट रहेगी, यू विल डेफिनेटली ओवरकम इट, और आप उसको बहुत आसानी से इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह कर सकते हैं।
तो बात प्लानिंग की यहाँ पर आई, बिल्कुल प्लानिंग भी जो है ना वही है कि प्लानिंग हो या टू डू लिस्ट बने या टाइम टेबल बने, उस तरीके से। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, now with that we will jump to our questions. So I would request our organizer or convener Nasir to please ask the relevant questions जो आए थे हमारे इसमें, या फिर कोई यहाँ पर पहले let us prioritize this way कि अगर आपके कोई सवालात यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर ऑडियंस है 18-19, आप अपने क्वेश्चन को जो है ना पूछें। नासिर, कैन यू जस्ट क्लोज द स्क्रीन और स्टॉप स्क्रीन शेयर। तो यहाँ पर जो लोग हैं, आप अपना जो है ना कोई सवाल है टेक्स्ट में डाल सकते हैं, डालें, या वॉइस में अगर पूछना है, इट्स अ गोल्डन चांस। देयर आर नॉट लॉट क्वेश्चंस, सो यू हैव अ गुड चांस, यूजुअली व्हेन वी गो टू मक्का वगैरह हम जाते हैं, तो आई यूज्ड टू रिमेंबर इवन चाइल्डहुड में भी हजर अस्वद को जो है ना छीने का जब मौका रहता, भाई जिस दिन ऑडियंस कम रहती, जब लोग कम रहते, ऑफ सीजन में जाते हैं, बोलते यार बहुत जबरदस्त जाके हजर अस्वद को जो है ना छीना है ना, हम प्लान करते हैं। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, लॉट ऑफ पीपल, लास्ट टाइम वी हैड अराउंड लाइक 90 प्लस 100 के करीब थे, एंड यूजुअली प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस रहते हैं, तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, भाई सवाल करना है। नॉट दैट जो है ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बट एक ये मौके पे ऐसा होता है कि हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों के सवाल आंसर होते नहीं है। So even though I'm student of knowledge also, I'm no expert in this, but let me just share my own experiences if at all anybody has any relevant question to this. So please go ahead, shoot your questions, preferably in voice or in chat, however you feel convenient. Otherwise जो ना जो questions हमको आए हैं Excel sheet में, हम उसको लेंगे इंशाल्लाह, but we'll wait for a few seconds, let's say 30 seconds. Okay. तो ऐसे दिख रहा कोई क्वेश्चंस नहीं है। आई थिंक द टॉपिक हैज बीन वेल कवर्ड बिइज़्निल्लाह इंशाल्लाह। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, है ना, सो आई विल डू माय बेस्ट टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चंस, कोई अगर पुराने वाले क्वेश्चंस या हमको जो पहले आगे थे बिफोर द प्रोग्राम, इफ कोच अबुलाला यू कैन आस्क देम, दैट वुड बी ग्रेट, और अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह लेट्स सेव टाइम, वी आर डन विद इट बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट बाय द वे। Coach Abulala, can you please kindly just read out those questions? Assalamu alaikum. Yeah, one of the questions is the participant are asking, like they're making the to-do list and planning, but they're still procrastinating. So how can they avoid that? That's one of the questions which has come in the Excel sheet. अच्छा, प्लानिंग हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है। तो बेसिकली उसमें बात वही आती है कि जैसा मसूद भाई भी बताया कि वंस यू हैव प्लान्ड, now you have to do it, so immediately start taking action. अगर टास्क बड़ा है तो टेक द स्टेप 1, बाद वक्त टास्क लंबा होता है, मतलब इट्स नॉट कि 10 मिनट में हो जाए, इट विल टेक प्रोबेबली 1 आवर और मे बी इवन 2-3 आवर्स, लेकिन स्टेप 1 तो आपको करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बाहर से जाके कुछ लाना है और वो लाने के लिए आपको घंटा 2 घंटा लगने वाला है, बट स्टेप 1 क्या है उसमें? स्टेप 1 ये कि घर से नीचे बाहर निकलो, जो है ना कार में बैठो, ड्राइव करना शुरू करो। Once you start doing that, rest will... Sorry, internet connection चले गया मेरा इधर, तो I missed it. Did you ask for the second question? Yeah, I did. The next question is, please tell us more about
4 quadrants of time management and how we can practically use them in our life. Okay, fantastic. 4 quadrants हम last time लिए थे, you know, urgent, important, urgent, not important, not urgent, important, not urgent, not important. तो ये चीज को करने से पहले हमको जो ना लिस्ट आउट करना होगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी काइंडली राइट इन द कमेंट सेक्शन के क्या क्या चीजें जो है ना आप एक दिन भर में टिपिकली आप पे क्या टास्क रहते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल नमाज पढ़ना, ऑफिस जाना है, एंड लेट्स से एक्सरसाइज, ईटिंग मील्स एंड मीटिंग्स, विजिटिंग द फैमिली फ्रेंड, समथिंग लाइक. सो काइंडली लिस्ट आउट आपकी लाइफ में क्या क्या टिपिकल जो है ना टास्क है. उसके बाद हम उसको जो है ना क्लासिफाई करेंगे कि कौन से जो है ना क्वाड्रेंट में आता है. इन द मीन टाइम अब्दुल्ला सर, कैन यू प्लीज शेयर दैट 4 quadrants sheet? Okay, so I'm waiting. Kindly shoot the answers. क्या क्या चीजें टिपिकली एक दिन में होते हैं? Come on, don't procrastinate so much. कि भाई अम्मा फोन टाइप करना भाई, write something. Come on, have fun. इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए. We have 19 people, at least one item. So हर आदमी एक आइटम भी डालो तो एटलीस्ट जो ना 19 आ सकता है हमारे पास. Okay, answering the email. Very good. और क्या रहते हैं डेली, सिंपल, इट्स जस्ट सिंपल. आप डेली के आपके टास्क क्या हैं? पानी नहाना, यस. गोइंग टू द वॉशरूम, यस, दैट इज आल्सो टास्क. मीटिंग्स, ओके. और क्या होते हैं? व्हाट एल्स? एक्सरसाइज, बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेके आना, कंप्लीट द टू डू लिस्ट, ओके. Responding to the mails, okay, that is the same thing as answering the emails. Okay, calls, studying, okay, very good. Pray Fajr Salah, very good. Office work. और क्या रहते हैं? बस इतने ही. चलें, so we'll come to the 4 quadrants. Abdullah sir, have you shared this? Okay, exercise. Visiting relatives, 5 वक्त की नमाजें. ओके, तो स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी शायद. आई थिंक इट्स इन द प्रोसेस. सो इन द मीन टाइम व्हाट वी विल डू इज, अब आप बताएं कि जो है ना लेट्स से नमाज है, तो नमाज कौन से क्वाड्रेंट में आती है? इज नमाज व्हिच क्वाड्रेंट डज इट कम? अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट? ऑब्वियसली नमाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, यानी टाइम पे पढ़ना है और मिस भी नहीं कर सकते, डिले भी नहीं कर सकते, और इमीडिएटली करना है. तो आपको क्लासिफाई ये करना है कि इन अ गिवन डे व्हाट यू हैव टू डू इज क्लासिफाई योर टास्क. कि आप अनइम्पोर्टेंट चीजों को अहमियत दे रहे हैं क्या? कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है. प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, कोई फजूल की या कुछ लघु बात, क्या आप उस चीज में पढ़ रहे हैं? तो इस तरीके के जो चीजें हैं वो टोटली कट आउट करना है आपको. डोंट डू लिस्ट क्रिएट करना है. क्या क्रिएट करना है? डोंट डू लिस्ट. नहीं करने की जो है लिस्ट बनाना है, और वहां से आपको निकालना होगा कि ये चीज आपको नहीं करना है, कट आउट करना उसको. अर्जेंट इंपॉर्टेंट को प्रायोरिटी देना है, वो तो देना ही है. और अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा लेकिन अर्जेंट है, तो आप उसको डेलीगेट भी कर सकते हैं उसको. बट समथिंग इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है. इसमें जो है ना लेट्स से आपको एक्सरसाइज है, हेल्दी फूड खाना है, सेल्फ डेवलपमेंट है, बुक रीडिंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है. बिकॉज ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट तो वैसे भी हो ही जाएगा, वो आप छोड़ेंगे नहीं. बट जो इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट है वो जो है ना यूजुअली मिस होता है, और उसको प्रायोरिटाइज करना होगा. दैट इज प्रेडोमिनेटली अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट, दावा, दीनी प्रोग्राम्स, दुरूस, इवन दिस प्रोग्राम ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट का प्रोग्राम है. इज नॉट, आप नहीं भी करें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. आई होप आंसर आ गया इस इंशाल्लाह. नासिर, यू कैन डिसकंटिन्यू द स्क्रीन शेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कोच बिलाला.
Yeah. The next question is like, how can we teach time management to children? Okay. We have had a parenting session yesterday. Alhamdulillah, 3 week series चल रही थी हमारी AMLC के through. The major point which we talked was, अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा, बच्चे वही सीखने वाले हैं. हम अगर टाइम की कदर करेंगे तो बच्चे टाइम की कदर करने वाले. Children are a mirror reflection of your actions. Mark those words, very important. Children are mirror reflection of your actions. आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, आप जबरदस्त टाइम मैनेज कर रहे हैं, आप जो ना वक्त को अहमियत देते हैं, the same thing the kids are going to do. That is the point number 1. और जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो आपको सेकंड स्टेज में जो करना है कि उनको खुद का अपना टाइम टेबल बनाना है. यू टेल देम, क्रिएट योर डेली, आपका टाइम टेबल क्रिएट करें. यू सेट एंड गाइड देम, डोंट सुपर इम्पोज देम. उनको गाइड करें कैसा टाइम टेबल क्रिएट करना, कैसा जो है टू डू लिस्ट क्रिएट करना. साथ में बैठे सुपरवाइज करें, माइक्रो मैनेज ना करें. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इफ यू माइक्रो मैनेज, यू क्रिएट एंड गिव द टाइम टेबल, दे विल नॉट फॉलो इट. ये मसला होता है. Probably questionnaire, the one who questioned had the same problem. Let them work, create their own timetable. उनको टाइम की इंपॉर्टेंस बताएं, उनको अपना टाइम टेबल क्रिएट करने दें. Let them create their to do list. Sure, remind them, review them, and motivate them. Don't criticize them. तो इस तरीके से इंशाल्लाह they'll be able to do it. और ये भी उनको आप किताबें भी जो है ना दे सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, वक्त की अहमियत के ऊपर. गिव देम सम बुक्स एज अ गिफ्ट वगैरह इंशाल्लाह. Yes, next question. Okay, we see quite a few questions here, Abdulmannan, with related to procrastination. I'll just read them out and you can reply all of them combined. One of them is how to avoid procrastination, and then another person has asked how to handle procrastination. I make plans to do things and make planning and strategy, but when the time comes to do action, I procrastinate. And then another one is procrastination, काम को टालना and miss the work. And he or she says the reason for procrastination is don't like to do the work, kahili, laziness, and he keeps telling himself he will do later, something like that. And how to stop procrastination when we are feeling scared to do something. And yeah, I think that's all of those are some of the questions about procrastinations. Pretty much मेरा ख्याल में हम आंसर्स उसके पूरों के ले लिए हैं उसके. द ओनली पॉइंट जो लास्ट का है कि जो चीज के बारे में डर है उसको कैसा करना. तो फियर का मामला ऐसा है, मैं लोगों से ये बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं भाई बहुत डर होता है वो करने से, मतलब वेरी फियर. कभी आप डर को देखिए क्या, डर का कुछ कलर है क्या, डर का कोई साइज है क्या, डर को कोई आज तक देखा है? कोई नहीं देखा डर को. डर इज ओनली अ थॉट. सो द बेस्ट सोल्यूशन फॉर फियर इज व्हाटएवर यू फियर, फेस इट. वही उसका सोल्यूशन है. वंस यू फेस इट, you will see कि जो है ना it didn't exist. You actually enjoy the process. और success is always out of the comfort zone. तो comfort zone में बैठ के आप कामयाब होना चाह रहे हैं तो होने वाला नहीं है. You have to face it. आपको करना ही होगा. First step लेना ही होगा आपको. Then only the results will start coming in. So yes, the solution is face it, nothing else. Because these are two different things. Procrastination एक अलग चीज है और एक जो है ना fear से जो है ना पीछे हटना. So having fear and not facing it is it's more about mindset and lack of confidence वगैरह की चीजें हैं. तो but pretty much it covers इंशाल्लाह के जो है. Once you start facing it, you start over. Again, that's a habit. You start facing your fears, you'll make it a habit of facing whatever challenging comes in your life. Take it as a challenge. Don't take it as a stumbling block. Don't take it as a कोई चीज रोकने वाली है. एक चैलेंज के तौर पे as a game, play it, you'll overcome it inshallah. Any other question? Yeah, thank you so much, Coach Abdulmannan, for the answer. Yeah, we covered quite some points, and especially with regards to आप पहले भी बताए थे 5-second rule, immediately जो है एक्शन में आ जाना, ज्यादा उसके ऊपर सोचना नहीं, जैसा आपने बताया है. So I think that was a really good answer. It's just a thought. So that's the good news, kid. Because it's just a thought, we can immediately resolve it just by controlling our thoughts. And the 5-second rule is the way to control our thoughts, not going to overthinking mode. So thank you so much. Other question is like how to balance time between office and housework, as working in 24/7 shift. How to keep us alert and perform salah
during office hours? And another related question I'll add here, Abdulmannan. Assalamu alaikum. I work in an MNC in night shifts, so I only get to sleep in daytime. So I'm unable to offer Salat of Asr and sometimes Maghrib as well. So how can I manage that? Because I already tried to wake up and perform Salat, but could not do so. Please help. Okay, very relevant question. And I have literally seen people, in my friend circle and very close relatives also, जो ये problem face कर रहे हैं. और ये काफी common problem हो गया because of, globally जो है hiring, firing चलने की वजह से. Ideally speaking, leave that job. Ideally speaking, अगर आप कर सकते हैं, कोई better job मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, because आखिरत से बढ़ के कुछ भी नहीं है. तो you have to prioritize. That's one thing. But I know it's not always the case, or it's not so easy कि जॉब छोड़ के दूसरे इसमें चले जाएं. But जॉब ढूंढते रहना है. और दूसरा जो आपको कंसीड, because it's very unnatural. अल्लाह ताला रात सोने के लिए बनाए हैं और दिन माश के लिए बनाए हैं. तो that is the natural cycle. आप उसको unnatually आप करने जाएंगे तो you will face the repercussions, no doubt about it. Health issues रहेंगे, there are a lot of things. हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि आपको फिर अपने स्लीप को मैनेज करना होगा. You have to be a good manager of your sleep. और आप देखें कि एक ऐसे स्लॉट में उठें कि असर मगरिब को दोनों को, जैसे इंडिया में असर मगरिब के बीच में गैप कम रहता है, तो आप वैसा मैनेज कर लें. या इवन इन सऊदी वगैरह में भी है, तो आप प्रॉब्ली हो सकता है कि आप मगरिब बजमात हो और असर उससे पहले आप उठ के आखिरी वक्त पढ़ सकते हैं. बट एट एनी कॉस्ट खजा नहीं होना चाहिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो फर्ज है, फराइज पे नो कॉम्प्रोमाइज. तो खजा नहीं होना चाहिए. और यस, यू हैव टू डू इट. इट्स चैलेंजिंग. अलार्म सेट करें, दूसरों को बोलें कि भाई मुझे ये टाइम पे उठाना है. नीयत रहेगी, इरादा रहेगा, तो अल्लाह असबाब बिल्कुल उसके बनाएंगे. इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फील यू आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, देन यू विल बी. बट इफ थिंक यू आर एम्पावर्ड एंड यू कैन टेक योर लाइफ इन योर कंट्रोल, देन यू विल बी इंशाल्लाह इन दैट केस. और अल्लाह मदद करेगा. उसके बावजूद अगर मिस है तो अल्लाह माफ करेगा इंशाल्लाह. बट एटलीस्ट इंटेंशन और मैक्सिमम हमारा इरादा, डिटर्मिनेशन उसमें होना चाहिए. प्लानिंग वैसा होना चाहिए कि जैसे आपका ऑफिस टाइम हो गया, इमीडिएटली आप सो गए, मोबाइल कर लेते बैठे हैं, या फिर फुजूल टाइम कर रहे हैं, डिले करके सो रहे हैं, तो फिर नमाजें मिस होने के चांसेस है. सेम गोज फॉर इवन पीपल जो दिन में काम करते हैं और रात में लेट सोते हैं, फजर खजा करते हैं. सो अल्टीमेटली इट्स हाउ यू प्रायोरिटाइज. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. जी, Abdulmannan, thank you so much. So आखिरत is really important. We have to give it the first preference, and उस हिसाब से हमको प्लानिंग करना है. डिटर्मिनेशन रहेगा तो हमको मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, कोच अब्दुलमन्नान. एक क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल 24-hour day we have to sleep about 8 hours plus 8 hours plus 1 hour lunch for office and 1 hour travel, 1 hour for coming and going. Totally 11 hours are already for office and 1 to 2 hours are basic necessities. So that is equal to 20 to 21 hours. We end up with only 3 to 4 hours sandwich across the day. How to take out time for deen activities, relationships, reading and development, etc.? जबरदस्त क्वेश्चन है. सी व्हेन यू आर यंग, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में रहते हैं, तो आपको टाइम एट ए स्ट्रेच मिलता है. बट एज यू ग्रो ओल्डर, जैसा आप लाइफ के रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जाते हैं, जॉब लाइफ है, फैमिली, किड्स, रिलेटिव्स, ससुराल वगैरह, तो वहां पर आपको टाइम पॉकेट्स में मिलेगा. तो आपको एक अखंड एक घंटा 2 घंटे नहीं मिलेगी. Probably you'll get some 5-10 minutes in your office break, probably some 5-10 minutes between azan और नमाज के बीच में, and you will have to utilize time while you're driving. let's say आप बोले भाई 1 घंटा ड्राइविंग में जा रहा है या आधा घंटा ड्राइविंग में जा रहा है, वो टाइम पे आप जिक्र अस्कार कर लें. वो टाइम पे आप अगर समझिए somebody else is driving, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, तो आप किसी से रिलेटिव से बातचीत कर ले सकते हैं. सोशल रिलेशंस है, यूटिलाइज दैट टाइम. आप वो टाइम में कुरान पढ़ सकते हैं. यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. तो इट इज हाउ यू यूटिलाइज दोस टाइमिंग्स. और वो पॉकेट्स में जो टाइम मिल रहा, उसको 5 मिनट्स 10 मिनट्स जो भी मिलते जाएंगे, उसको यूटिलाइज करना होगा आपको. सो जस्ट रिमेंबर दैट कि एज यू ग्रो ओल्डर, टाइम आपको पॉकेट्स में मिलेगा, और वही टाइम को आपको इस्तेमाल करके कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज हासिल करना. और ये भी ध्यान में रखें कि समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड इन अ डबल वे. लेट्स से फॉर एग्जांपल आई मेक इट अ पॉइंट के व्हेनेवर आई एम गोइंग इन कार, फैमिली के साथ हूँ, तो मैं यूटिलाइज इट टू द बेस्ट कि बच्चों की तरबियत में कुछ उसको इस्तेमाल कर लें. स्पेंडिंग सम, इफ किड्स आर नॉट देयर, स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर वाइफ,
तो वो ड्राइविंग टाइम बेहतरीन टाइम रहता है, मोबाइल भी नहीं रहता, यूज भी नहीं कर सकते, चाहे तो आप अच्छा कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, बच्चों को जो है ना कुछ सिखा लें। आई मीन वी यूज्ड टू हैव अल्हम्दुलिल्लाह इन आवर चाइल्डहुड, अब्बू के बहुत टाइट ड्यूटीज रहते थे, स्कूल आते जाते जो ना हम लोग सूर्य याद करे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, काफी चीजों की काफी बातें, तरबियत वगैरह स्कूल आते जाते जो ना होती थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू हैव टू यूटिलाइज दोस टाइम। जैसा कोई खास बैठ के मैं तरबियत करूंगा, खास बैठ के मैं जो ना कुरान पढ़ूंगा, खास बैठ के मैं दीन का काम करूंगा, आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज वो आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो अगेन रिटायरमेंट के बाद जो ना वो टाइम आता है। तो ये साइकिल कंप्लीट होती है जब। तो बट नाउ यू हैव टू यूटिलाइज द टाइम के जो है चलते फिरते उठते बैठते एक पर्पसफुल लाइफ रही तो आप ऑटोमेटिकली आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Jazakallah khair, Abdulmannan. That was really great answer, especially like as you grow up, you get pockets of time. The next question is again related to that, but again it's a little different. Uh, the, sometimes I have difficulty in which activity I should do. Which activity I should do first? Okay. Sometimes I find difficulty which activity to do first. That's what he means to say. And which activity I should do later or not do at all. Sometimes I realize some activities which I did were not important. Kindly advise, how do we prioritize our activities? वेरी गुड क्वेश्चन। प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी लास्ट टाइम करे भी हैं, और उसका सिंपल आंसर ये कि 4 क्वाड्रेंट्स जो ना आप यू स्टार्ट यूजिंग इट, एटलीस्ट एक हफ्ता भर इस्तेमाल करें डेली जो ना भाई, तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो ना आपका टास्क कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो एंड यू विल नो व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हिच हैज टू बी फोकस्ड, है ना, ऑटोमेटिकली। और लास्ट टाइम आल्सो आई थिंक अब्दुल्ला से डिड यू शेयर द शीट, वेरिको की जो शीट है टाइम का जो ना आवर बाय आवर हिसाब रखना, और इसमें इफ नॉट प्लीज जस्ट शेयर द शीट वंस अगेन काइंडली, तो लोगों को बेनिफिट करेगा। जिसमें जो है ये एक्सेल शीट है, जिसमें जो है ना आप आवर बाय आवर हिसाब रख सकते हैं अपने टाइम का। डू इट फॉर 1 वीक, यू नो, नॉट मच, 1 वीक 10 डेज, और उसमें काम को जो है अब इम्पोर्टेंस के हिसाब से क्लासिफाई करने का भी उसमें ऑप्शन है। तो देन यू विल वंस यू मेक इट अ हैबिट व्हाट टू प्रायोरिटाइज, देन यू विल स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग। या फिर आपकी टू डू लिस्ट लिखते हो जो ना आप इंपॉर्टेंट चीजों को पहले लिखें, अनइम्पोर्टेंट चीजों को बाद में लिखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Great. I mean, like those were almost the questions. I mean, like some of them are like similar. I just don't want to go that. I mean, like one of the questions is how to take out time for self-development, like reading, Everything is gaining done. knowledge. It's done. So the We have questions covered are. So with that, thank you so much. I mean, like these are the questions which are been asked by different people. Practical issues which I have faced. Yeah, I think there is one question we see in the chat here right now. Maybe you can respond. How do you share the Excel sheet by Sheikh Afan? Maybe you can clarify what exactly you mean by that? वही एक्सेल शीट अभी जो मैं बताया वही है, अब्दुल्ला से शेयर कर देंगे उसको इंशाल्लाह। I have shared it already in the chat box for everyone. कहाँ पे डाले नासिर? नहीं नजर आ रही। हाँ, नहीं नजर आ रही। It is there, Abdulmannan. We sent by we support. It's visible to. Okay, fine. There. No worries. And there's another question. How do you limit the distractions by Masood Khan? And also, I would just add one related question, which was that was like, how do you control mobile distractions? I think that was covered. How can we stop wasting time on mobile? So I think you can say there are little bit 2 different questions. Masood Saab is asking how do you limit distractions, and other question is इसमें हम ऑलरेडी लास्ट टाइम भी कवर करे थे। देखिए जैसा मसूद भाई का क्वेश्चन है कि हाउ डू यू लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस। So point number 1 is what are the distractions? When you already know the distractions, who is the one to stop them? The person himself, right? तो इसके लिए हम लास्ट टाइम बताते थे कि मेजर डिस्ट्रैक्टर जो है ना मोबाइल है, या फिर डिवाइसेस जो है हम कह सकते हैं, फिर बाद में कुछ हद तक जो है बच्चे वगैरह या फिर अदर पीपल एंड ऑल ये हो सकता है, बट प्रेडोमिनेंटली डिवाइस है। तो व्हाट आई पर्सनली डू इज व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ वेरी सीरियस टास्क, आई पुट माय मोबाइल ऑन एरोप्लेन मोड, आई इन्फॉर्म एवरीबॉडी इन माय होम, इन द ऑफिस, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट गोइंग टू यूज मैं मोबाइल में एक्सेसिबल नहीं हूँ।
एंड 2-3 आवर्स या फिर 1 आवर अगर मैं इवन ऑफलाइन रहता हूँ एरोप्लेन मोड में, गेस व्हाट, 5-6 घंटे का काम जो ना 1 घंटे में हो जाता है। एंड जनरली स्पीकिंग आई हैव डिसेबल्ड ऑल नोटिफिकेशंस इन ऑल द एप्स इन माय मोबाइल। नो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, नो any notification, only notification जो आता है SMS का आता है। तो I have disabled all notifications because see, you should not be a slave to technology. Technology is there to serve you. Technology is your slave. मेरे को जब खोलना है, जब मैं WhatsApp खोल के दिखूंगा, उसको पिंग करके मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। No sound comes, no push notification comes regarding email. Even though I'm an entrepreneur, alhamdulillah, लेकिन even for emails I don't have a push notification. For WhatsApp also no push notifications. पूरे push notification disabled है। Amazon रहने दो, whatever it is, I don't need। जब मेरे को होना है मैं खोल के देखूंगा। So इस तरीके से आप distractions को जो ना लिमिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ना आप घर वालों को बोलते जो आप काम पे कर रहे हैं, भाई जरूरी काम पे हैं भाई, don't disturb me, close your room, lock it and do your best. That's actually you are the one who's going to decide, है ना, कि क्या चीज डिस्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना है। डिस्ट्रैक्टर्स मालूम हो गए, restrict it, है ना। Create your to-do list, इसलिए मैं बताया ना लास्ट में, create your to-do list। जी। Yeah, Abdulmannan, I think those are almost all the questions. Alhamdulillah, we were able to cover all of them. Abdulmannan sir, over to you. Jazakallah khair for the question answer session, Bulala bhai and Coach Abdulmannan as well. यहाँ पर हम हमारा प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं एंड होपफुली यहाँ से जो इससे पहले का भी सेशन था और ये भी सेशन था ऑन टाइम मैनेजमेंट, इंशाल्लाह हम लोग अपनी लाइफ में टाइम को कैसे और बेहतर मैनेज कर सकते हैं, जो सीखे हैं यहाँ पर वो अमल में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। एंड उम्मीद है कि ये सेशन सब लोग के लिए मुफीद था। एनी पर्टिकुलर कुछ भी आपको क्वेरीज हैं तो वी सपोर्ट के ईमेल पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर उसके जो इंचार्ज वेबसाइट है वहां से भी आप कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर कोच अब्दुलमन्नान फॉर योर टाइम एज वेल। आपने लास्ट 2 वीक्स लास्ट 2 सेशन से हमने देखा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपकी एक्सपर्टीज ली है, जज़ाकल्लाह खैर। एंड यहीं पर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक्सेल फाइल में रीशेयर कर रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में।